Student, welcome back to Gokuldas Public School online classes. Okay, yesterday you have learned chapter number 3 about safety and first aid. We learn about what do you mean by first aid, what are the rules of giving first aid, then about road sign and about cuts and wounds, and one more topic, a sprain. Now today our next topic is fracture. Open your book. Book page number 34. Okay, only you have to listen and understand. Okay, open your book, page number 34. I am reading, just pay attention in your book. Fracture. When a bone in the body breaks, it is called a fracture. जब आपके शरीर में कोई हड्डी टूटती है उसको क्या कहा जाता है? जब वो क्या हो जाता है, हमें फ्रैक्चर हो जाता है. The fractured bone causes a lot of pain. जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है. The affected area swells up. The affected area swells up means that portion where the fracture happened, वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है. स्वेल मीन्स सूजन आ जाती है और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है. We cannot treat a fracture on your own. The only thing which can be done is to ensure that the fractured part is not moved. है ना? अगर हमें फ्रैक्चर होता है तो हम उसे खुद अपने आप नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना होता है. The only thing which can be done is to ensure that the fractured part is not moved. जहाँ पे भी आपको फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करानी है. If the fracture is in the arm, make a sling with a triangular piece of cloth and give support. है ना? If the fracture is in the arm, is in your hand, then you have to make a sling with a triangular cloth. It is given in your book picture of sling. What do you mean by sling? A triangular piece of cloth which gives support to our arm. Okay. Then third point, if the fracture is in the leg, take any easily available article like magazine, cardboard and wood, etc. and tied it around the injured part. This will act as a splint and prevent the movement of the bone. If the fracture is in your leg, then you have to give support by the splint. Okay, this will prevent the movement of that fractured part. Take the patient to a doctor. If needed, then take a patient to a doctor. Okay. What is fracture? When a bone in the body breaks, it is called a fracture. Okay. When a bone in the body breaks, it is called a fracture. What will happen if fracture happen? First, it will cause a lot of pain. And the fractured part or affected area swells up. Okay. All of you understood this? What do you mean by fracture? When a bone in the body breaks, then it is called a fracture.
what will happen if fracture happen in our body? First, it will cause a lot of pain. Then second, it will affected area will swells up. Then what first aid you have to give in fracture? First aid, in case of fracture, what you have to do? If the fracture is in your arm, okay, then you have to give support by sling. Sling means a triangular piece of cloth. Okay, it is shown in your book. Sling means triangular piece of cloth which gives support to the arm. Okay, then second one, if the fracture is in your legs, then you have to give support by splint. Which prevents the movement of a bone. Okay, understood? These 2 points you have to keep in mind. If the fracture is in your arm, then you have to give support by sling, means triangular piece of cloth. Okay, then if the fracture is in your leg, then you have to give support by splint, which prevent the movement of a bone. Okay, all of you understood, I think. Then next topic in your book is given about nose bleeding. Okay? Okay. Pay attention in your book about nose bleeding. When all of a sudden blood starts flowing from the nose, it is called nose bleeding. है ना, जब नाक में से अचानक ही खून आने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? नोज ब्लीडिंग. इट इज़ अ कॉमन ऑकरेंस इन चिल्ड्रेन. आप देखते हैं बहुत से बच्चों की गर्मी के टाइम पे ये नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है. फर्स्ट, make the patient sit down on a chair with his or her head held back. Okay, first you have to make patient sit down on chair and put his or her head
at the back side. It is given in your book, picture. Put an ice pack over the nose to stop bleeding. Okay, you have to keep an ice pack on the nose, over the nose, to stop bleeding. Then ask the patient to breathe through the mouth for some time and not to blow his nose. है ना? Then you have to ask patient to breathe through mouth, not from nose, for some time. If the bleeding doesn't stop, take the patient to a doctor. अगर फिर भी bleeding stop नहीं हो रही है, then you have to take the patient to a doctor. What is nose bleeding? Underline this line in your book. When all of a sudden blood starts flowing from a nose, is called nose bleeding. Okay, when all of a sudden blood starts flowing from the nose, it is called nose bleeding. Then what first aid we have to give for nose bleeding? First, make the patient sit down on a chair with his or her head held back. Okay. What first aid first we have given? Make the patient sit on a chair with his or her head held back. Okay. Then second point, put an ice pack over the nose to stop bleeding. Then third, ask the patient to breathe from the mouth. Okay, third point, ask the patient to breathe from the mouth, not from the nose, and not to blow his nose. Okay. Then what is the next point? Point number 4. If the bleeding doesn't stop, then take a patient to the doctor. Take a patient to a doctor. Okay. Once again, I am revising what is nose bleeding. When all of the sudden bloods come from our nose, it is called nose bleeding. Okay, it is a common occurrence in children.
Then what we have to give if nose bleeding happened to a patient? Make the patient sit on a chair with his or her head held back. Okay. Then second, put an ice pack over the nose to stop bleeding. Third, ask the patient to breathe from the mouth, not from the nose, and not to blow his nose. Fourth point, if the bleeding doesn't stop, then take the patient to a doctor. Now, choose the correct option is given in your book. Oral question. Oral questions. Choose the correct option. Okay? Choose the correct option. Read first one. Accident can happen anywhere, oblique, only on the road. So, answer one is anywhere. Accident can happen anywhere. You have to put tick on anywhere. Second, a crack or a break in a bone is called fracture. Okay. A crack or a break in a bone is called a fracture. You have to put tick on fracture. Third, a tourniquet or a sling is a tight bandage used to stop the flow of blood from a wound. Third option is tourniquet. It is a type of tight bandage which stops the flow of a blood. Then fourth one, use a splint oblique ice pick to give support to a broken bone. Fourth option, what we have to use? Splint. Okay. If the fracture is in your leg, then we will give support by a splint. Okay. First, accident can happen anywhere. You have to put tick on anywhere. Then second, a crack or a break in a bone is called fracture. You have to put tick on fracture. Third, a tourniquet is a tight bandage used to stop the flow of a blood from a wound. Then fourth one, use a splint to give support to the broken bone. All of you have done? Okay. Then now look at book page number 35. Our next topic is about burns. Burns means jal jana. Okay. Now look at into a book. Pay attention. Burns. Burns can be caused by hot objects, fire, steam, firecrackers, boiling water and chemicals like acid. है ना, आपका जलना किसी के भी, या तो आप गर्म वस्तु या गर्म चीज़ को पकड़ेंगे तो आप जल सकते हैं, फायर आग से, फायर क्रैकर्स पटाखों से, बॉइलिंग वाटर गर्म पानी से या किसी भी केमिकल्स लाइक एसिड से आप जल सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज माइनर बर्न? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बर्न्स. Burns can be caused by
hot objects, firecrackers, fires, boiling water, chemicals like acid. Okay, acid. Then there are two types of burn. There are two types of burns. First, minor burns, and second one is severe burns. There are two types of burns, minor burns and severe burns. Burn can be caused by hot objects, fire, firecrackers, steam, boiling water, or chemicals like acid. There are two types of burns, minor burns and severe burn. Now about minor burns. Okay, minor burns. Minor burns cause redness in the skin. जब आपको माइनर बर्न मतलब हल्का सा जलता है तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है. देयर इज अ पेनफुल टिंगलिंग सेशन इन द अफेक्टेड पार्ट. आपको हल्का हल्का वहाँ पे दर्द होता है. कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन अप्लाई आइस ऑन दैट एरिया. है ना, कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर. आपको क्या करना है, जो भी आपका पार्ट जल गया है उसको कोल्ड रनिंग वाटर के अंदर रखना है फॉर अ फ्यू मिनट. देन अप्लाई एन आइस पैक ऑन दैट अफेक्टेड पार्ट. अप्लाई any antiseptic lotion or cream on the affected part. Then you have to apply an antiseptic cream or lotion on that part. A paste of baking soda and water can also be applied to get relief from burning sensation. है ना, अगर आपको जल जाता है तो आपको बेकिंग सोडा एंड वाटर को मिक्स करके उस अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, जिससे आपका जो बर्निंग जलने वाला जो सेंसेशन होता है, आपको जलन महसूस होती है, वो नहीं हो. ओके, तो फर्स्ट अबाउट माइनर बर्न्स. व्हाट यू हैव टू, क्या होता है माइनर बर्न्स में? माइनर बर्न्स कॉज रेडनेस इन द स्किन. आपकी जो स्किन होगी वो रेड हो जाती है. देन देयर इज अ पेनफुल टिंगलिंग सेशन इन द अफेक्टेड पार्ट. आपको अंदर ही अंदर ऐसे जलन जैसा लगता है. देन कीप द बर्न्ड एरिया अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर. व्हाट यू हैव टू डू, कोल्ड रनिंग वाटर के अंदर आपको अपना जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको रखना है. देन एंड अप्लाई एन आइस ऑन दैट एरिया. आपको उसके ऊपर आइस लगाना है. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और एंटीसेप्टिक लोशन ऑन दैट अफेक्टेड पार्ट. उसके बाद आप उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन उस पर लगाएंगे. अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू गेट रिलीफ फ्रॉम टिंगलिंग सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन. अगर आपको फिर भी जलन महसूस हो रही है तो आप उस पर बेकिंग सोडा वाटर के साथ मिक्स करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी जो जलन हो रही है वो कम हो जाए. नाउ अबाउट सीवियर बर्न. अबाउट सीवियर बर्न्स मीन्स जब आपको बहुत ज़्यादा ही जल जाता है. Sometimes burns are severe and blisters are formed. जब जल जाता है ना, जब ज़रूरत से ज़्यादा ही बिल्कुल जल जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं. Then you have to, what you have to do, never prick the blisters. आपको वो ब्लिस्टर्स को फोड़ना नहीं है. Gently cover the burnt part with a clean cloth or sterile gauze and take the victim to a doctor. जब कोई ज़्यादा ही सीवियरली बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो
तो आपको उसको क्या करना है, क्लीन क्लॉथ से कवर करना है. देन टेक अ विक्टिम टू अ डॉक्टर. आपको फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना है. ओके. फॉर सीवियर बर्न्स नेवर इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म, है ना, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फफोले हो जाते हैं. देन नेवर प्रिक द ब्लिस्टर्स. आपको उन ब्लिस्टर्स को फोड़ना नहीं है, प्रिक नहीं करना है. देन जेंटली कवर द बर्न्ड एरिया पार्ट विथ अ क्लीन क्लॉथ. आपको वो क्लीन क्लॉथ से कवर करना है. एंड देन टेक अ विक्टिम टू अ डॉक्टर. ओके. Then fire fighting. Fire fighting. Okay, pay attention in your book. Fire fighting. First we will read once again about burns. Okay, burns can be caused by hot objects, fire steam, firecrackers, boiling water and chemicals like acid. Now in minor burns cause redness in the skin. There is a painful tingling sensation in the affected part. Keep the burnt area under cold running water for a few minutes. Then apply ice on that area. Apply an antiseptic lotion or cream on the affected part. A paste of a baking soda and a water can also be applied to get relief from the burning sensation. In case of severe burn, sometimes burns are severe and blisters are formed. Never prick the blister. Gently cover the burnt part with a clean cloth or sterile gauze and take the victim to a doctor. Now our next topic is fire fighting. Pay attention in your book. What do you mean by fire fighting? Fire spreads very fast, है ना, आग बहुत जल्दी ही फैलती है. Hence it is very important to control it quickly. आपको जैसे आग लगती है तो वो जल्दी ही फैलती है, इसलिए हमें उसको तुरंत ही रोकना होता है. We can control all kinds of fires either by reducing the temperature of burning substance or by cutting off the air supply, है ना. हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि फायर्स को? by cutting of the air supply. First of all, inform the nearest fire station. You have to first inform nearest fire station. आपको पास के ही fire station को call करके बुलाना चाहिए. First point, if fire is caused by burning paper or wood, it can be extinguished by throwing water or sand or mud over it, है ना. अगर फायर किसी बर्निंग पेपर या वुड के कारण हुई है तो उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? बाय थ्रोइंग वाटर, उसके ऊपर पानी डाल के, या बाय थ्रोइंग सैंड और मड ओवर इट. देन इफ द फायर इज कॉज्ड बाय पेट्रोल, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट. इफ द फायर इज कॉज्ड बाय पेट्रोल, अगर पेट्रोल के कारण आग लगती है तो उसमें वाटर नहीं डालना है. वाटर विल फ्लेयर अप द फायर. वाटर से क्या होगा? आग और बढ़ जाएगी. Put out the fire by throwing lots of sand or mud on it, है ना. आपको क्या करना है? अगर पेट्रोल के द्वारा आग लगती है तो आपको वाटर यूज़ नहीं करना है, उसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे? सैंड और मड यूज़ करना है हमें. If the fire is caused due to electric short circuit, okay, it can be controlled by throwing sand or mud over it. Fires can also be put out using fire extinguishers. And fires can also be put out by using fire extinguishers. And if the fire is caused by electric short circuit, by electricity, then you have to put sand over it. Okay. And we can also put fire by using fire extinguishers. If a person's clothes catch fire, do not allow him to run around in a panic. है ना. अगर किसी पर्सन के क्लॉथ में आग लग जाती है तो आपको उसको वो इधर उधर ना दौड़े, है ना, पैनिक होके इधर उधर. दिस फेंस
द फ्लेम्स, क्या होगा, उससे और आग लगेगी। मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, व्हाट यू हैव टू मेक देम रोल ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड पे उसको रोल करने का कहना है। कवर हिम विद अ थिक ब्लैंकेट टू पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फिर आपको क्या करना है, उसको ब्लैंकेट के ऊपर रोल करके उसको रोल करना है ग्राउंड में, ताकि जिससे उसको जो ऑक्सीजन एयर का सप्लाई है वो बंद हो जाए। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? फायर, व्हाट यू हैव टू डू इन फायर? फायर कॉज्ड बाय wood or burning paper, then what you have to use? Put a sand or water over it. Okay, then if a fire is caused by petrol, you don't have to throw water, you have to use only petrol. Do not use water, use sand or mud. Okay, similarly fire caused by electric short, you don't have to use water, you have to use sand, or and one more thing, you have to use fire extinguisher also. Okay, now today our topic is finished. We will continue it with tomorrow about animal bite and snake bite. You have to read this chapter once again, and if you have any doubt, please ask me on my personal number. Okay, thank you, have a nice day, stay home, stay safe, thank you.